ओके तो तमाने समस्त को क्लियरली ऑडिबल होउची तो आमे एबे हमर सेशन स्टार्ट करिवा तो आपण समस्त को वेलकम हमर एलएम ट्रेनिंग सेशन को तो आज तो कोन ट्रेनिंग अछि आपण माने समझ जानि छंती जेमति कि ओसीओसी एडमिशन रे आपण को जो प्रॉब्लम होउथिला कि क्लास कला बेले कि किछि चैलेंजिंग आपण को चैलेंजिंग मोड को आपण को नै जाउथिले पिला माने कि एमति किछि क्वेश्चन थिले जोटा आमे पढिने आमे केमति सही प्रोसेस रे एडमिशन देबा ठीक अछि बहुत गुडे करी आसुथिला आपण मानकठू तो सही सबु रो आउ तार एक्स्ट्रा जिंस किछि नाही खाली बेसिक नॉलेज आपण टिके पाइबे ता सहित इरा रे जो सेशन गुडा का आपण कवर करूचंती जदि भी की करिसंती प्रॉब्लम फेस करचंती से माने भी कहि परिबे तो हमें पचारिबु गोटे सेशन रखिबु तो सही रिलेटेड हमें ट्रेनिंग सेशन का स्टार्ट करिसे आज केवल आमे पाइथन प्रोग्रामिंग ही रखिछे ए सेशन ता पाइथन प्रोग्रामिंग ही अछि ठीक अछि तो हमर पाइथन प्रोग्रामिंग जो कोर्सेस हमर रही छि ओसीएसी रो जे ट्रेनिंग देबे तो से सर अछंती तांका ना होछि वेणु माधव रथ सर तांकर 25 इयर्स एक्सपीरियंस होछि आईटी सेक्टर रे तो से भी हमर निजे ट्रेनर अछंती ओका ट्रेनिंग सेंटर रे से आपण माने को ट्रेनिंग देबे आज आपण को डिटेल से ट्रेनिंग देबे ता सहित आपण माने को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करैबे ठीक अछि तो एबे मु सर को रिक्वेस्ट करबी सर तांगा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करबी वेलकम टू आवर एलएम ट्रेनिंग सेशन थैंक यू मैम थैंक यू तो गुड आफ्टरनून ऑल गुड आफ्टरनून मु वेणुमाधव प्रथम गुड आफ्टरनून सर ऑफिशियल तरफ मो तरफ समस्त को वेलकम करूची मोर आज पाइथन क्लास रे तो हमें स्टार्ट करिबा शेयर करिबा हमने ना जो रिपोर्ट को तो अरे कीवर्ड ऑन करछि हमरो ओके अछि आपण मान देखाउ मो स्क्रीन नो सर नो ठीक अछि सर कोन विचार में चलो इसलिए आपण मान स्क्रीन देखाउ यस सर ओके थैंक यू आगे देखो सर तो हमें स्टार्ट करिबा आज रो ए पाइथन प्रोग्रामिंग ओके फर्स्ट मु इंट्रोडक्शन नु स्टार्ट करिबी पाइथन इंट्रोडक्शन ओके मो स्क्रीन आपण मान सु देखा जाउची ओके सो पाइथन जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाय ता पूर्वरु मु जानिबा चाहूची व्हाई विल गो फॉर दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काहे की सिखिबा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोन पाए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानिबा एवं सिखिबा एवं डे टू डे लाइफ में यूज करिबा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें सिखिबा द्वारा कोन बेनिफिट हबो व्हाट आर द बेनिफिट्स वी विल गेट लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द फर्स्ट पॉइंट टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आपण माने जानुथबे आजिरो दुनिया रे विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम आसुची तो हमें गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जदि सिखि जीवा तबे हम पई कोन हबो गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे हमें इफेक्टिव प्रोग्राम्स बनै परिबा किछि ऑनलाइन रो सॉल्यूशंस जेमति आपण माने देखते वर्तमान गोटे बैंकिंग सेक्टर रे कोन होउची हम पाखरे टाइम नाही मु चाहूची कि जनक पाखु मनी सेंड करबी आमे जदि गोटे एप्लिकेशन बनेबा वेब एप्लिकेशन तबे कोन हबो घरे बसी कि आमे मनी ट्रांसफर करि परिबा किछि मोबाइल एप्लिकेशन आमे तयारी करि परिबा
तो एमती आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा बहुत किसी जिनिस घरे बसिक इजिली सॉल्व करि परिबा एवं जेते रियल वर्ल्ड रो जो सब प्रॉब्लम वर्तमान आसुची ताकू आमे सॉल्व करि परिबा। आमे देखिबा प्रथमे पाइथन रो हिस्ट्री। प्रथमे आमे देखिबा पाइथन केमती आसला, लोक माने केमती जानिले पाइथन निजे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ पछरे कोन हिस्ट्री अछि प्रथमे जानिबा। First appearance in the early 1980 1980 मसीहा रे प्रथमे पाइथन लोक मानको माध्यम को आस्तिला एवं ये पाइथन को जे एक्चुअली डेवलप करथिले ताकर नाम थिला गुइडो van रोसन। आमे जदि पचारिबा हु इज द फादर ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग रो फादर कहले आमे तांकु ही बुझू। से नेदरलैंड रो लोक, ताकर हायर स्टडी से एक्चुअली कोठी ना completely has completed the computer science and mathematics. So from that day onwards, the people they have used Python is one of the programming languages. हमें जानिबा कहीं से Python नाम देले। Why that programming language name is Python? से एक्चुअली टीवी रे उटे सीरियल देखंती, सेतर उटे सीरियल चलथिला टीवी रे, that is Monty Python Flying Circus. So every day he likes to watch that serial. से सीरियल देखु देखु तांका मन रे आसी गला जे we can give that name to the Python. So 1991 onwards he named it Python. तबे हमें को ईयर नु जानिले पाइथन एक्चुअली 1991. So now we are in 2025. So that is around how many years? 25 plus 9, that is 34 years. 34 years. Yes, right, 34 years. So people are using the Python, and the official release of the Python was 20th February 1991. से सीधा डेवलप कर देले, but the officially first release Python was February 20th 1991. तापर देखिबा what are the different versions are there. Different versions. I have a question to all. Why in a programming language different versions are there? So anyone having any answer? Why different versions are there? What are the different versions are there? Yes. Right. Updated in the sense what exactly? Class updated कहले हम कोन बुझी? Updated कहले किछि अपडेट रो अर्थ गोटे वर्जन बाहरिची, नेक्स्ट वर्जन जो आछी, व्हाट आर द डिफरेंस यू आर गेटिंग इन द नेक्स्ट न्यू features include होगा, new class, new functions. These are the new features making improvement, box free environment. So day by day software development is going on. So different versions are there. The first version was Python 0.9.0. It was in 1991. And similar way, one version came to the market, and Python 1 1994
1.5, 1997. In 2000, that is Python 2.0. Similar way, so many versions are there. What is the latest version of the Python? Anyone having any knowledge? What is the latest version of the Python? कि आपण मान भितर जानि जंती कहिबे 3.11. 3.11. No, it's not the latest version. Anyone? आउ कि आपण मान भितर कहिबे on latest version कोन अछि? आउ कि जानि जंती कि 3.12. 3.13. Now the latest version of the Python is 3.13. Okay, and the latest stable version 3.13.3 released on April 8. So nowadays people are using the latest version, that is 3.13. So how will get which one is the latest version? Kem check kariba ame? How will check it? Ame kemti check kariba je Python no version अछि 3.13. How we can check it? download kala bele site check kariya. Download कोठी करिबा where we can download? Python.org. Okay, Python.org. You will go for Python.org. You will find one download option. You have to click there. So it will ask you to download. There only you can see it. Okay, good. So this latest version you can check it. That is the official website of the Python. So you can go for it. That is 3.13. Very good. We'll see why Pythons are popular. Why the Python program is popular nowadays? कौन पाई Python programming को लोको माने एते पसंद करचंदी, but why the people are using Python? Why most of the MNC they are using Python for the development? The first feature we'll see the very simple, easy to learn. The first feature of the Python is simple, easy to learn. It's a very simple because the syntax is very straightforward and just like the English language. I simple English language जेमती हमें कहूँ जो print करिबु print. So we can use that print function to print something. So there is no use of the semicolon or the curly braces. एथे किसी semicolon बा curly braces सेते किसी complexity nahi as compared to other programming. That's why it is called simple, easy to learn. आमे जेमती इंग्लिश यूज करछु इंग्लिश बडे आमे यूज करछु सिंपल आमे सिंटैक्स यूज करिवु एवं ताकू आमे व्यवहार करि पारि. सेकंड फीचर्स इज वेरी इंपोर्टेंट, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. What is the meaning of expressive? Few lines of code. Simple example, let's say I'll write a program in C programming. So I have to write hash include stdi.h int main, then I will write print hello world like this. You will go for the Java programming. I will write class name, public static void main string arguments, system.out.println hello world. But in case of Python, only I will write one line code, print hello world. So if I will compare three programming languages, C, C++, and the Python, you will find that very less code is required for the output. C programming देखिबा हमको 5 लाइन कोड लिखिया पड़िबो. जावा देखिबा हमको 7 लाइन रो कोड लिखिया पड़िबो. किंतु हम यदि Python लिखिबा only one line code we can able to print the hello world. That's why it is called expressive, and very less code is required for to do the program. That's why it is popular, because the people they like to write less code with output.
आमे जदि गुटे अल्प कोड लिखि जदि गुटे आउटपुट पाई जिबा ताले आमे निश्चय भाबा मु काई कि व्हाई आई विल राइट नंबर ऑफ लाइन्स मु 4 लाइन कोड लिखि कि मु गुटे आउटपुट पाई जिबी काई कि व्हाई आई विल राइट दी 50 lines or 20 lines code. That is called the second features. So that's why Python is nowadays very popular as compared to other programming language. Third one is interpreted language. Generally, interpreted language means lines by line code. आमे जेते बेले लिखिबु कोड लिखिबु सेते कोड हबो ना प्रत्येक लाइन अनुसार चेक हो. That is the meaning of executed line by line. So it is interpreter is used. I think all of you know about interpreter. जदि न जानि थिबे भलो कथा मु आगु कहिबी के कहि परिबे व्हाट इज द इंटरप्रेटर. Sir, it's a language translator. जोटा कि हां one time रे line by line convert करे. अच्छा कंपाइलर कौन. Compiler sir, सेटा भी ଗୋଟେ language translator, but at a time सब जाको convert करि पारे, but error detect करि पारे नहीं. Okay. But interpreter error detect करे sir. Okay. So it is interpreter. That means the interpreter that is used to execute the lines of code. Next feature is called cross-platform or the platform independent. What does it mean? Platform independent कहले हमें कौन बुझू. भावतु हमें पाइथन प्रोग्राम टा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रे करछि. तो प्रोग्राम टा मु लेखिली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रे ताको एग्जीक्यूट कली. यदि सही कोड टा मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिबी कोन हो तबे सेठी भी मु मध्य ताकू यूज करि परिबी. इट्स ए इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म अर्थ सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म हैला सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर. तेनु जे कोनसी मु कोन करिबी जो कोड टा मु एग्जीक्यूट करिबी से कोड टा को जदी मु गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रु आउट ऑपरेटिंग सिस्टम को नै जिबी तेबे मध्य I can able to run the Python program. That's why it is called cross-platform language or the platform independent. So we can run Windows, Linux. So we can move the portable in the sense we can move our code from one operating system to other operating system easily, so that I can able to run this program any operating system. Next feature is free and open source. No need to pay anything. Python will not take any charges from the users. Directly we can go to the official website and we can download the Python. So it is free for everyone. If you will visit the website, that is python.org, so we can download the Python. No charges is required. It's a completely free and the open source. It will not ask you to pay anything. That is called free and open source. Object-oriented programming. So basically, we have two types of programming. ये कोई परिवे two types of programming हमरो अच्छी actually. Two types of programming. ये procedure oriented और object oriented. ये दुईटा भी तो difference कौन अच्छी actually. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड भितर डिफरेंस के जानि जंती कि कहबे कि कहबे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिफरेंट कौन एग्जांपल के एग्जांपल उठे दे परिबे
procedure oriented example. ठीक है, procedure oriented example ला C programming. It's a object oriented. It's a procedure oriented programming and object oriented programming. That is, you can say the Java programming. Okay, it is also one object oriented programming because it supports the concept inheritance, polymorphism, encapsulations. These are the basic concept of OOPS. So that's why it is called object oriented programming languages. Large standard library. Python has vast range of library. All inbuilt libraries are there. Directly we can use that library and whatever the functions available, we can use it. That's why no need to write this code. Less number of code is required. This is called large standard library. Next feature is graphical user interface programming support. Graphical user interface, because nowadays everything is in graphical user interface. What about the application we are developing are in the form of graphical user interface. Can you example देई परिबे graphical user interface? Can you example कोई परिबे कोटा graphical user interface? Windows. What is graphical user interface? ये कोई वे Can interact with symbols, folders, okay, good example. मतलब good example कोई भी that is okay, but good example कोई भी मतलब operating system interface whereas okay. command line गुड़ाक icon taskbar ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ simple example କହୁଛି what is graphical user interface. ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ application ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ login screen ଥାଏ. ସେ login screen ରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଆପଣଙ୍କୁ user name ଆଉ password enter କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଟନ ଟେ ଥାଏ submit କି login button. This is one simple example of graphical user interface. तो ताकू भी हमें डिजाइन करी परिबा पाइथन रे टिके इंटरपोली जो कांसेप्ट हमको सब टीचर सपोर्ट करूची पाइथन रे ताकू नै कि हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी तैयारी करी परिबा. डायनामिकली टाइप्ड, very important concept. Dynamically typed. Generally कौन हुए on any programming language, we declare a variable. How we declare a variable? Like we declare a variable int a is equal to 10. What is the meaning of the line int a is equal to 10? We are assigning value 10, that is integer, and that variable is a. But in Python, no need to specify the data type. Again, I am repeating the important concept. Whenever we are writing a Python program, in that program, we are not mentioning any data type. Directly, we are writing x is equal to 10, y is equal to 20. But in other programming, you will go for C and C++ as Java. You must have to write int a is equal to 10. Int b is equal to 20, int c is equal to 30, like this. It is dynamical type according to your data, so it will be considered.
That's why it is called dynamically typed. No need to specify the data type. Other programming language, we must have to write the data type. One more feature that is called both procedure-oriented and object-oriented. It means it supports some of the features of the C programming, some of the features of the C++ programming. So both procedure-oriented as well as object-oriented. These are the 10 features, important features in the Pythons. এই 10টা features ରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି କାହାର କିଛି କୋଉଟା I will repeat again, ଯଦି କାହାର କିଛି କି ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, you can ask me freely so that I can help you to analyze again. So 10 features, again I am repeating. What are the 10 features? 9, sir, dynamically. Simple, easy to learn, expressive language, interpreted language, cross-platform, platform independent, free and open source, object-oriented language, large standard library, graphical user interface programming support, dynamically typed, both procedure-oriented lines. Next we'll go where exactly that Python program are used. Web development. Nowadays, basically there are two types of applications, standalone application and web application. So frequently people are using web application. Web application in the sense, same time, multiple people can use that application from different locations. Instagram is one of the important example, like you can say that. Same time, people from different locations, they are using. Standalone application, जो application टा केवल हम निजो machine ने निजो system रे में use करते, that is called standalone application or window based application. So in real world रे basically two type of application रहुची, गोटे रहुची window based, आउटे ला web based. So web based application पाई Python use करा हूँ. Data science is one of the important. Python can be used for the data science due to its simplicity. The code is very simple. That's why in data science also you must have to know the Python before to go for the data science course. Data science course करिया को हेले हमरो Python रो जहाँ सब लाइब्रेरी रोची, pandas लाइब्रेरी, numpy लाइब्रेरी, विभिन्न जो लाइब्रेरी रोची सबो, से लाइब्रेरी को हमें यूज करके हमें डाटा साइंस से ताकू डाटा को हमें यूज करी परिबो, विभिन्न डाटा एनालिसिस एल्गोरिथम पाई हमें मध्य यूज करी परिबो. Artificial intelligence, Python is also extremely used for artificial intelligence. Machine learning, अपन सुनी थी chatbot, Google Assistant, सब विभिन्न प्रकार artificial intelligence, machine learning रे जो आप सब डेवलप करा होची, से आपको यूज करिया पाई हमें माने वर्तमान Python को यूज करते. Python नो नॉलेज बिना नॉलेज रे हमें आगो को किसी करी पाई. Education sectors, education में programming को पिला माने college level, school level, university level ले बिना application निजे से माने develop करते. Python widely used education for learning purpose due to simplicity. Even game development भी Python में होती. Software development. Software is nowadays people are developing the different softwares. They can go for software development using Python.
तो वाइड यूज आज रही दुनिया रे पाइथन रो डिफरेंट फील्ड रे आर एप्लीकेशन यूज करा होची एप्लीकेशन को डेवलप करा होची तो आपको हमें कहबा भी गोटे पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जे कि हमको एते कम कोड रे एते बेनिफिट्स दे पर पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3 ये कोई परिवे कौन डिफरेंस एक्चुअली पाइथन 2 और पाइथन 3 विषय ये जानी जल्दी क्या गुरु पाइथन 2 कौन पाइथन 3 कौन कोठी सुनी जल्दी की पाइथन 2 की पाइथन 3 सुनी जल्दी के No idea. अच्छा ठीक है both are mostly same only new features are added in python 3 पूर्व वर्षन में जो बाहर थिला पाइथन 2 आउ एबे जो पाइथन 3 लेटेस्ट अछि आ भितर बेसी किछि डिफरेंस नाही ओनली फ्यू डिफरेंस किछि रहउछि उडा छोटा एग्जांपल मु देबा को चाहूछि कोन डिफरेंस एक्चुअली मु प्रिंट करिया को चाहूछि हेलो वर्ल्ड पाइथन 2 रे कौन थिला प्रिंट हेलो वर्ल्ड ता द्वारा कौन होतला ना हमें प्रिंट करि पारथले सो हियर प्रिंट इज अ स्टेटमेंट हमें प्रिंट को एक स्टेटमेंट बोली भाबुथलु पाइथन 2 रे तापर लेटेस्ट वर्जन आसिला पाइथन 3 आसिला पाइथन 3 रे से स्टेटमेंट टा गोटे फंक्शन हे गला ताको गोटे फंक्शन चेंज कर देले एवं हमें लिखिलु प्रिंट गोटे पैरेंथेसिस लेफ्ट पैरेंथेसिस डबल कोट देलु ता भीतर लिखिलु हेलो वर्ल्ड पाइथन 2 से भी हेलो वर्ल्ड करथुला अब पाइथन 3 से भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कला पर डिफरेंस कौन रहिला सेठी गुटे प्रिंट इज स्टेटमेंट थिला आ एठी कौन हैला प्रिंट इज फंक्शन नो यूज ऑफ कीवर्ड एज एंड पाइथन 2 व्हाट इज डिपेंडेंट देन हमें बुझिबा कंप्यूटर कैन एबल टू अंडरस्टैंड ओनली द मशीनरी कोड 0 and 1 but we will write the python program तले कंप्यूटर केमती बुझिबो कंप्यूटर केमती बुझिबो हमें जदि पाइथन लिखिबा कंप्यूटर केमती बुझिबो एवं केमती से एग्जीक्यूट करिवो भाबिनो तो मोटे एग्जांपल देबी दुई जन लोक अछंती जनकर ना हला एक्स से केवल ओरिया जाने आउ जने लोक अछंती वाई से केवल हिंदी जानती दुई जन लोक अछंती जने ओरिया खाली जानती आउ जने लोक अछंती से खाली हिंदी जानती प्रथम लोक जी ओरिया जानी से जदि पचारती हिंदी जानी लोक को जे आज तुम कौन लंच रे कौन खाइल तुम कौन हम तेबे से कौन आंसर देबे से केमती बुझिबे से केवल हिंदी जानती तो सर ट्रांसलेट करे पड़े हिंदी को ये ट्रांसलेट करिवे ट्रांसलेटर करिवे तांको पाखरे हिंदी और ओडिया दुईटा मतलब किबा दरकार एग्जैक्टली ताहले जदि एमिति गोटे लोक थिबो जे कि बहुत ओडिया एवं हिंदी बुझी पारथबो तांको जदि आमे नबा से कोन करि परिबे ना से याको सॉल्व करि परिबे
So compiler is exactly same thing. It is a program. So compiler is a program, or you can say that it's a translator. It's a program or translator which will convert high level programming language to machine level programming language. ताले compiler गुटे program जे कि कौन करिवो high level programming को convert कर दबो machine level. High level programming कोइले हमें कौन बुझी ये कोइबे user interface कौन कोइले programming language Java Python C++ sir two language means जो language user interaction machine code को binary code high level programming language कोइले हमें कौन बुझू actually अपन तो example कोइले पु पचली high level programming language कोइले हमें कौन बुझू MC programming language domain understanding computer संगे गलती करतो high programming language रो अर्थ it's a human language अपन इंग्लिश सहित जो language टा similarity रहउची हमें print लिखुछु print hello world तो print टा भी उठे English language सहित similarity रहउची जेटा human language that is called the high level language. Machine code is only 0 and 1. Machine code is only in 0 and 1. So it's a translator which will convert high level programming language to machine code. तो आमे जोटा लेखुछु सेटा कंप्यूटर बुझी परिबोनी ता machine कारण computer can able to understand only the machine code that is 0 and 1. तेणु ट्रांसलेटर कौन करिवो ना ताकू कन्वर्ट करियो जेमती हमें बे एग्जांपल देखिले जे जणे ट्रांसलेटर जे कि ओरिया और हिंदी बुझी पारथबो से ट्रांसलेट करिकि अन्य को कहि एठी भी सेमती कोन हबो ए कंपाइलर जे ट्रांसलेटर जे कि बुझी पारथबो एग्जांपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखि से बुझी पारथबो एवं ताकू कन्वर्ट करथबो मशीन को ताले हम एठी देखिबा डायग्राम दिया आइची डायग्राम में कौन देखुछंती डायग्राम में कौन देखा होची कंपाइलर कौन करूची हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करूची लो लेवल लैंग्वेज ताले एरर गुटे लिखा आइची कौन सेटा के कोई भी आपण मान भितरु जानि जंती कि गुटे एरर मार्क दिया आइची एवं एरर लिखा आइची सर तो जणे जणे कहतु हां एरर कौन एक्चुअली कहतु सर हमें जते किसी लैंग्वेज लिखुछु किसी कोड सर हमें जेतेबे किछि लिखुछु प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखुछु हां मिस्टेक होची हमर मिस्टेक होची सेटा होची एरर गोटे एग्जांपल कोइ परिबे आपण कोन मिस्टेक होची एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रो सर एग्जांपल स्टेटमेंट लिखुछु कंसोल एल कैपिटल अच्छा
जहाँ की प्रिंट खाली ଗୋଟେ error ଦେଖଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଖାଲି process block missing इंटरप्रिटर अच्छा आपण माने कहउछन सिंटैक्स एरर सिंटैक्स एरर अच्छा मनरा जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड रे मु लेफ्ट पैरेंथेसिस दे देछि बट राइट पैरेंथेसिस देइनी error देखिए that is called the syntax error. So if the compiler बुझी न पारिला, if compiler is not able to understand what it is written in high level language, so it will give the error. Again, user has to modify that error. User को पुनी error का modify करियार अछि. ताले जाई कि again it will convert to the low level. जदि convert करू करू किसी error show हैला संगे संग compiler user को notification दबो that error is exactly. So in case of error is there, so you will find you have to modify again and you will go for the compilation so that it will convert high level to low level. Then what is the interpreter? Compiler is a translator which will convert source level programming to machine. Then what is an interpreter? interpreter translator Okay. can translate the program statement and statement wise also. Okay. So it is also a translator. And it will convert source code to machine code. But line by line. So interpreter, it's a program which translate high level language into the machine code line by line during the program run. So if I will ask you which one is faster, compiler or interpreter? Sir, compiler Compiler is faster because entire program टाको से completely convert कर दो. Entire program it will be converted. Okay. interpret Okay. So आपको line by line translator भी कहा जाए. Interpreter is also called as line by line translator. after deposing So generally PHP, Perl, Ruby, these are the interpreted, and interpreter will help to convert high level to low level. What is PVM? ये छोड़ी चलती आपण मान भितर PVM, what is the full form of PVM? ये आपण मान भितर JVM छोड़ी चलती JVM Python virtual machine. Python virtual machine. So what is that actually? कौन काम तारो? बाइट कोड को मशीन कोड. তাহলে বাইট কোড কেমতি আছে?
তাহলে বাইট কোড को कन्वर्ट करा जाए বাইট কোডটা কেমতি আছে সোর্স কোড রু বাইট কোড কেমতি আছে Sir, compiler. कंपाइलर तो हिडन कंपाइलर गुटा एक्चुअली रखा जाए जोटा कि हिडन कंपाइलर था से कन्वर्ट कर दिए सोर्स कोड टू बाइट कोड देन पीवीएम will convert byte code to machine. So Python virtual machine referred as Python interpreter responsible for the executing the Python. Flavors of the Python. Different flavors of the Pythons are available. Compiler interpreter are created using C language, the flavor that is called C Python. If the compiler or interpreter is created using the Java, that is called the J Python, Iron Python, PyPy Python. So different flavors of the Pythons are available. So different programming language, the interpreter is created using different programming languages. So based on the requirement, people are in this world, they are using, some are using that C Python, Iron Python, PyPy Python, like this people are using. Java versus Python. What is the difference between Java versus Python? First difference, we will see that Python has less number of code. Already I have told that hello world print kariya pai mate gotte line no code sufficient. Only I will write print hello world. But same hello world print kariya pai mate 5 line Java ର code ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ. Class name, public static void main string arguments, then system.out.println, then close brackets like 5-6 lines. So code wise, first one is that is code wise very less in case of Python, but in Java, so you have to write more number of lines as compared to. So whenever you develop application similar way, less number of code is required in case of Python, but in case of Java, more number of code. Second, syntax wise, Python syntax is very simple, easy to remember. आपण माने पाइथन रो सिंटैक्स टाको बहुत सहज रे मन रखि परिबे. जावा भले एते कॉम्प्लेक्सिटी नाही. जावा रे कर्ली ब्रैसेस देबे ताको एंड करिवे पुनी तार सिंटैक्स को मन रखिया पड़िबो. सेमति किछि पाइथन रे नाही. बहुत सिंपल, easy to remember and similar to the human language. Third is key features, less line code already know, less line of code already have got. Speed. Speed wise, you can see that Python is slower because it uses the interpreter. Interpreter already I told that it's a line by line translator. Interpreter got a line by line translator. तेणु आर स्पीड एज कंपेयर टू जावा, तो जावा रे कंपाइलर यूज करा होची तो फास्ट रहिबो, बट पाइथन इज स्लो. इट यूज द इंटरप्रेटर एंड डिटरमाइन द डाटा टाइप एट द रन टाइम. डाटाबेस रो अर्थ कोन एक्चुअली की बुझचंदी व्हाट इज द डाटाबेस? What is the database? Database को ले कौन बुझिए में?
डाटा कौन एक्चुअली किए बुझुंती कहबे मते व्हाट इज ए डाटा डाटा इनफॉरमेशन भितर डाटा और इनफॉरमेशन दुईटा एक सेम जिंस ना अलग जिंस different. कौन मतलब बुझी कहबे ते दिस इज डाटा दिस इज इनफॉरमेशन डाटा कहतु कोटा डाटा कोटा इनफॉरमेशन दुईटा को सेम दुईटा को सेम ना अलग अलग कहतु मते गोटे एग्जांपल देखी फैक्ट डाटा इज ए फैक्ट ओके इनफॉरमेशन is the process to data. प्रोसेस दी डाटा Information is the end point of final output. अच्छा आपण कहले मते गोटे खाली एग्जांपल गोटे कोन आपण जा Suppose कहले suppose we are purchasing daily. ओके And at the end of month, we are calculating the value. ओके गोटे क्लास रे 20 जन पिला अछंती एवं 20 जन पिला एग्जाम देले एग्जाम देखि 20 जन मार्क रखिले 20 जन जने 15 रखिला 20 रखिला एमती 20 पिला मार्क रखिले इट इज डाटा और इट इज इंफॉर्मेशन गोटे क्लास रे 20 पिला थिले 20 पिला एग्जाम देले एवं समस्ते निजे किसी मार्क रखिले एटा डाटा एटा डाटा अच्छा तारे इनफॉरमेशन कोन हबो Total calculation. It information is मु जदि पचारे Result हां कोंदो मु जदि पचारली सबुटु हाईएस्ट मार्क किए रखिला दिस इज डाटा और information. this is called information so when the data is Information. processed when the data is processed information is generated तो गोटे क्लास रे 30 पिला थिले से मन जो मार्क रखिले that is called the data but when I calculate who is having highest mark that is called information किछि डाटा को नहीं कि गोटे डाटा बेस तैयारी करा जाय किछि डाटा को नहीं कि किछि डाटा बेस तैयारी करा जाय so database is nothing but a collection of data collection of interrelated data example गोटे स्टूडेंट रो मु कहबी let's say one student studying in a college तार name roll number registration number gender email id contact number ये सब डाटा को नहीं कि डाटाबेस रे हम ताको रख कई किछि डाटाबेस सुनी चंती कि ओरेकल Yes, sir. yes good very good Access from Oracle. Oracle SQL server MySQL these are called the database why database is required I mean database कौन पाए actually use करू database is nothing but we can store huge amount of data and which can be used for future आमे फ्यूचर रे किछि डाटा आमे जो डाटाबेस धरा जो एग्जांपल मु कहली गुटे यूनिवर्सिटी रे 1000 स्टूडेंट्स अछंती तो 1000 स्टूडेंट्स पाई मु जदि पेन पेपर लिखिबी ताले मोर गोटे सर्च करिवा पाई मते बहुत समय लागिवो 1000 डाटा रो मु जनकर कांटेक्ट नंबर बा ईमेल आईडी काढियो चाहूची ताले मते कोन करिया पड़िवो ना बहुत समय
खोजिबाकू पड़िबो बट जदि मु डाटाबेस रे रखी देथिबी डाटाबेस रो गोटे लैंग्वेज अछि दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल के छोनी जदि आगरु Yes, sir. Query language. स्ट्रक्चर क्वेरी Query language. मु एसक्यूएल यूज करिकी डाटाबेस रु मोर जहा डाटा रिक्वायर्ड डाटा मु पाई परिबी तेणु डाटाबेस मते दरकार जे कोनसी एप्लीकेशन पाई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन रे डाटाबेस ही यूज करा जाए कोनसी एप्लीकेशन कोनसी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बिना डाटाबेस रे एक्जिस्ट हुए नहीं तेणु डाटाबेस ता पाइथन रे database layers are weaker as compared to Java. Database wise, Python is not good. But in case of Java, that is strong, which will provide the more security as compared to Python. So real world file database both important concept. Limitation, disadvantage of the Python. Python no कौन drawback, limitation अछि. Python is very slow. हमें जानिलु काहे कि slow ना it's line by line. The execution is line by line, so that's why it's very slow. Database access layer is very slow also. High memory consumption, अधिका memory लिए. Once you develop an application in the Python, so many temporary files are created, so many processes are created. That's why it will take the high memory consumption. Not too good, not to develop the mobile app. So we should not use the Python for the mobile app. So these are the limitations or the disadvantage of the Python. Otherwise, in other way, everything is fine. What is a program? मैं program कहले कौन बुझी? Anyone? अपन मान विद्रु की जानी जती? What is a program? Program कहले कौन बुझी हमें? I'm talking about computer program. It is a set of functions. It is a set of Instructions. set of instruction. It is a set of instruction by programming language. It is a set of instruction by programming language that computer uses to perform specific task or the function. हमें यदि कंप्यूटर को आम लैंग्वेज रे कहबा कंप्यूटर विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बट यू विल गिव द इंस्ट्रक्शन टू Inputs to number. Which number? Which number? SF2 number. Which number? Okay. Simple example. Example, let's say x is equal to 10. We are writing in Python x equals to 10. If I'll say to computer, add 5 plus 3, computer will not add this number. But you will give the instruction like x is equal to 10,
y is equal to 20, c is equal to x plus y, print c. These are called the instruction. These are called the instruction so that computer will be able to understand instruction which is written by a programming language. हमें जो instruction का दबा ताकि यदि programming language लिखिबा, so what will happen? Computer will be able to understand the instruction, and this instruction can be used to perform a specific task or the function. हमें कहले बे जे program is a set of instruction. So एटी मु चारिटा instruction लिखिली for addition of 2 number to perform a specific task. So I can go for the addition of 2 number. Similar way, we can use like x is equal to 10, y is equal to 20, c is equal to x plus y, print c. So different set of instruction can be used to do the different task or the function. So the above are called the instruction in the Python. So nowadays different programming languages are there, C++, Java, Python, etc. Orthan both programming language available ଅଛି. Same program you can do using C, C++, Java, Python. So that's why it is called program is a set of instruction by programming language that a computer uses to perform a specific task. हमें जेकोसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे भी हमें ताकू करि परिबा गोटे एप्लीकेशन को हमें डेवलप करि परिबा तले कोन डिफरेंस होइबो खाली सिंटैक्स डिफरेंस होइबो सी प्रोग्रामिंग रे हमें लेखुतले प्रिंटफ C++ लिखिबा सी आउट जावा लिखिबा system.out.println Python लिखिबा print. Syntax is different. Different programming language having this different syntax. What is inso खाली ता syntax अलगा रहउची हमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करछु से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे हमें लिखु. हाउ टू रन द पाइथन प्रोग्राम हमें पाइथन प्रोग्राम को एक्चुअली कोड लिखिबो एबे केमति रन करिवो आगु के केबे करचंती रन करचंती. यस सर विजुअल स्टूडियो कोड सर विजुअल स्टूडियो कोड. अच्छा वो सिंपल ले कोड दु दैट इज ठीक अछि आपण करचन ठीक अछि विजुअल स्टूडियो करचन ता व्यतीत आउ कोठी आपण रन करचंती पाइथन प्रोग्राम ऑनलाइन रे रन करचंती किछि वेबसाइट किछि लिंक रे आपण रन करचंती ऑनलाइन आपण मान को भितर केही ऑनलाइन रे रन करचंती कि पाइथन प्रोग्राम नहीं सर केही करदा ठीक अछि हमें दुई वे रे पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करि परिबो गोटे ऑफलाइन मोड आउट एला ऑनलाइन मोड. ऑफलाइन मोड कोन एक्चुअली we can download the Python software from python.org. हमें वेबसाइट रू पाइथन को डाउनलोड करिवो ताकू इंस्टॉल करिवो इंस्टॉल करी हमें ताकू रन करिवो. बट ऑनलाइन ने कोन हो नाउडेज ऑनलाइन इज वेरी सिंपल. हमें गूगल को जीवो समस्ते स्टेप सुडा मन रखंतु निजे करिकि देखिबे गूगल की जाई कि स्टेप 1 अपन टाइप करिवे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर गूगल ले टाइप करिवे. अगेन आई एम रिपीटिंग
गूगल ले टाइप करिवे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर टाइप कला परे आपन को 3-4टा लिंक आसीबो programized.com लिंक करिवे ब्लैक स्क्रीन गुटे पाइबे लेफ्ट हैंड साइड रे अपन प्रोग्राम लिखिबे राइट हैंड साइड रे अपन रन करिवे अपन एबे 2 मिनिट रे अपन चेक करि पारंती गूगल ले टाइप करिवे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर चेक करि कोंतु गूगल ले टाइप करंतु ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर 2 मिनिट रो काम हार्डली इट विल टेक 2 मिनिट्स Sir, then go link फर्स्ट लिंक कोड पहले programme.com. बस क्लिक करंतु Yes, sir. आसी गला लेफ्ट हैंड साइड रे लिखंतु प्रिंट PRINT प्रिंट लेफ्ट पैरेंथेसिस प्रिंट लेफ्ट पैरेंथेसिस Hello world. हेलो वर्ल्ड डबल कोट दे कि हेलो वर्ल्ड लिखंतु गोटे रन Sir, बटन sir. Run button click करिवे. राइट हैंड साइड रे आपनकर आउटपुट आसीबो Sir. very simple way you can run the Python program. No need to install anything. Sir, how there sir? Repeat करूची आउ थर फर्स्ट गूगल ले जाई कि टाइप करंतु ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर Sir, prompt कौन sir? ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर जादू हाँ sir. प्रोग्राम आईची बोली फास्ट गोटे लिंक आस्थिबो लेफ्ट हैंड साइड रे आज्ञा sir. ता क्लिक करंतु Yes sir. लेफ्ट हैंड साइड रे प्रिंट लेफ्ट पैरेंथेसिस डबल कर दे कि हेलो वर्ल्ड कौन लिखिबे लेफ्ट हैंड साइड रे लिखुची देखंतु लेफ्ट हैंड साइड रे आपण लिखिबे कौन लिखिबे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखिबे स्मॉल p करिवे लिखंतु रन वाली बटन थिबो ऊपरे क्लिक कर दियंतु राइट हैंड साइड रे आपण आउटपुट पाइबे तो समस्ते ऑनलाइन कंपाइलर ऑन कर दियंतु गूगल ले जाई कि ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर टाइप करिकी ऑनलाइन कंपाइलर ऑन कर दियंतु प्रिंट योर नेम समस्ते फर्स्ट कौन करिवे ना निज नाम प्रिंट करिवे प्रिंट योर नेम तो लेफ्ट हैंड साइड रे प्रिंट लिखंतु आपण को नाम लिखंतु
डबल कोट देकी लेफ्ट parenthesis राइट parenthesis लिखंतु तापर रन बटन गुटे अछि क्लिक करन देखंतु आपण नाम जहाँ थिबो जहाँ नहीं थिबे आपन आउटपुट मो एग्जांपल राम कुमार मिश्र नहीं छी तो मते आउटपुट शो करूची राम कुमार मिश्र आउटपुट आपनकर आउटपुट आसीबो जहाँ आपण नहीं थिबे आउटपुट पाई परिबे देखंतु समस्त चेष्टा करंतु एग्जीक्यूट करंतु ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर Yes, yes, so green, no, red. Very common understanding. आउटपुट आपण पाइले आउटपुट पाइले आउट एग्जांपल देखिबा हमें विल गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल we'll add two numbers we'll add two numbers a is equal to 10 then b is equal to 20 c equals to a plus b print c समस्या लिखंतु सर मिले स्क्रीन देखाई छी ओके सर हां स्क्रीन देखाई छी करके आउटपुट केते कहबे केते आसी आउटपुट गुड आउटपुट अछि समस्त ट्राई करंतु समस्त करंतु हमें सहज प्रोग्राम रु कष्ट प्रोग्राम जीवा प्रथमे सहज प्रोग्राम तापर धीरे धीरे कष्ट प्रोग्राम को जीवा समस्त ट्राई करंतु ताऊ कान करला
पूरी डिस्ट्रिक्ट का अच्छी this is a sector distribution there to deliver. It is absolute point. It is constant अलगा कोई भी constant कौन A, B, C are variables. ठीक अच्छी तलाक बुझीबा सर हाँ कुहतु हाँ सर जेतबेले हमें इनवाइटेड कमा देले नंबर रे सेटा इनवाइटेड विदाउट देई हमें हाँ A is equal to 10, B is equal to 20, C is equal to A plus B. Print C देबे invite command देले से गोटे constant नहीं जीवो ताको हमें डबल कोट देके लिखिबा नहीं ताले A B C को वेरिएबल को आउच वेरिएबल कौन वेरिएबल अर्थ होला वेरिएबल्स आर सिंपली कंटेनर आपण भाबंतु गोटे प्लेट रे किछि मु स्वीट्स रखिबी एटे 10टा स्वीट्स हेई पारे 20 स्वीट्स हेई पारे 30 स्वीट्स हेई पारे so python variables are simply the containers to store the value हमें a रो वैल्यू 10 नहीं जे a रो वैल्यू भी 20 नहीं परिबा 30 नहीं परिबा 50 नहीं परिबा तलार वैल्यूटा सब बेले चेंज होउची हां सर that's why it is called variable जार वैल्यू चेंज होबार संभावना अछि ताकू हमें वेरिएबल बोली को प्रोग्रामिंग रे ओके सर जार वैल्यूटा सब बेले कांस्टेंट पाई रो वैल्यू 3.14 सब बेले कांस्टेंट समस्त को पाई कांस्टेंट नुए that is called the constant so variables A equals to B equals to what is equals to operator we are using assignment operator equals to हमें कौन कहूचे
आगु कहूचे असाइनमेंट ऑपरेटर a equals to 10 means 10 value is assigned to variable a आर अर्थ हैला आर अर्थ 10 value is assigned to variable a equals to 10 means B. very good 20 value is assigned to variable b फर्स्ट लाइन हमें बुझी पाले 10 value हमें second line Variable is also called a temporary memory location. yes whenever we declare a variable that is Yes. temporary memory location it will hold some value Yes, sir. Yes, sir. okay right third line what is the meaning of third line c equals to a plus b कौन तार अर्थ C stores the value of A and B. Means When the is- addition value of A and B. right whenever evaluation will done it will done from right to left remember whenever any evaluation will be done it will be done from right to left so here we have taken a is equal to 10 b is equal to 20 so a is equal to 10 plus b is equal to 20 10 plus 20 so evaluation will be done 10 plus 20 that is 30 then it is assigned to c getting my point so first evaluation will be done then it will be assigned to c so a plus b the meaning of the third line a plus b is added and the value is assigned to c in a programming language we'll think about that evaluation will be done from right to left not left to right okay next line we have print c what does it mean The value of C. the value of c will be printed the value of c will be printed That is the value the of c will be printed so we are getting according to the input 10 and 20 we are getting 30 is the result this is the way stepwise instruction will give the computer so it will be evaluated and finally it will give the result so this is the process all the process will be done stepwise sequentially and finally will get the result if I'll say for addition subtraction okay what are the few rules and regulations we have to follow variable pai हमको किसी rule मानिवा को पड़ेगा कौन rules variable name can contains letter digit underscore हमें जो a b c variable declare कले यही variable ना हमें किसी rules and regulation को मानी दबा को पड़ेगा हमको what is first rule only it will contains letter digit underscore so can I declare a variable like this can I A1 is the variable. right so can I declare a variable like this can I declare a variable like this No. no why
Why I can't declare a variable like this? Because it starts with a hash symbol. But according to Python naming rule, we can't declare a variable which starts with a hash symbol. Okay? Symbols are not allowed. Not allowed, right? So it's not allowed, and only letter, digits, and underscore. Only allow letter, digits. Letters means A to Z, capital, small A to Z, capital A to Z, digits 0 to 9, and underscore. A variable name cannot start with a digit. Can I declare a variable like this? No. No. Because we say that No, sir. it cannot. Beginning one. Good. So also we can't declare like this. It will violate our rule. Third rule. Variable names are case sensitive. Like, let's say two variables, like A equals to 10 and equals to 20. So these are two variables. One is small a, that variables names are the case sensitive. So be careful. Get different value. So variables. Few keywords are there. Any other programming language? Keyword are the Keywords are variable in program. okay. Any other programming language? Can you give one example of the keywords? Do, while. Do, while, these are the keywords. Good. So we can't use the keywords as a variable name. The next point, that is avoid the if, else, do, while keyword as a variable names. These are the rules we have to follow. Then another point, that is called assignment operator. Details will go about the operator, but here we have declared x is equal to 10. Equals to is called assignment operator. What is the operator? Operator koile kaun? Operators are the symbols which are used to perform with that. Okay. Operators are the symbols. What is operands? Operands are the variable. Operands are the variable. A plus B, which one is operator and which one are operands? Loss is the operator, A and B is the So loss is the operator, A plus B are the operands. Okay. So here also one operator, that is called assignment operator. What it will do? It will assign the value to a variable. Okay. It will assign the value to a variable. So this is called assignment operator. It assigns the value on the right side to the variable on the left hand side. In this case, the value 5 is an integer. We'll understand the line code by code. Let's say I will give you program for addition, subtraction, multiplication and division of two numbers. So I'll do it. All of you try it within 5 minutes. Addition, subtraction, multiplication and division of two integers. केमती करिया ताले हमें प्रोग्राम टी
आम एडिशन देखिले मैं दुईटा नंबर को केमती ऐड करवा देखिले सिमिलर वे वी कैन राइट केमती लिखिबा के कहबे केमती लिखि परिबा हाउ कैन राइट Sir, A is equal to 10, B is equal to 20. Suppose. very good b is equal to C is equal to A plus B, D is equal to A minus B, B D is equal to A to B, F is equal to A divided with. very good so similar way we can print Yes, sir. Yes, sir. similar way we can print this so addition subtraction multiplication division okay let's say I will give a program Sir, one question, sir. hello हाँ sir, print sum is T. Sir, in one line it will print row wise printing. no it will row wise first sum is 30 Yes, sir. Yes, sir. next line sum is this print Sir, this program automatically generates the next row. yes Okay, sir. as many as time you will write print so it Yes, will sir. be Yes, sir. so it will be give the output you can check it. This is called the हमें operator आगे पढ़िबा this is called assignment operator Yes, yes. okay तो एटा समस्त एग्जीक्यूट कर दियंतु 5 मिनिट रे एग्जीक्यूट कर दियंतु समस्त एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टा एग्जीक्यूट कर दियंतु समस्त 2 मिनिट लागिबो it will take hardly 2 minutes a is equal to 10 b is equal to 20 रानी पर हाँ मु कहली एडिशन ऑफ 2 नंबर हमें करथिले आज्ञा हाँ सही बोली मु चाहूची गोटे प्रोग्राम रे हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन गोटे प्रोग्राम रे चारिटा ऑपरेशन करबा आज्ञा सर तले a is equal to 10 b is equal to 20 स्क्रीन देखो तुम और c is equal to a plus b d is equal to a minus b e equals to a multiplication of b f equals to b divided by e print सब पाई गोटे गोटे प्रिंट कर दबा एडिशन पाई सब्ट्रैक्शन पाई मल्टीप्लिकेशन पाई डिवीजन पाई देखो प्रोग्राम टा दिया पूरा कंप्लीटली खाली टाइप करिवे टाइप कला बेले देखिए बोल की डबल कोड you must have to write you must have to give the left parenthesis right parenthesis and case sensitive you must have to see the variables name a b c d and multiplication that is multiplication star a star b that is multiplication
Sir, hey, bola. Good, very good. So हमें किसी प्रोग्राम डेली करिबा हमें you will get the level of confidence. तो गोटे टास्क मो तरफ रहिबो समस्त निजे करिया को ट्राई करिवे टास्क हैला write a Python program write a Python program to swap of two integers. क्वेश्चन ना दे जिमु पुनी नेक्स्ट क्लास जेते हेबो मु आगे देखिबे आगे write a Python program to swap of two integers. Swap means change, interchange. That means मु कोन चाहूची let's say x is 10 and y is 20. मु चाहूची how I will get this value x is equal to 20, x is equal to 20 and y is equal to 10. Sir, can you use third variable? Yes, you can use third variable. So two programs you have to try. You can use using third variable without using third variable. So two programs. One is using third variable. Sir, Without using third variable. Using third variable without using third variable. So दुईटा प्रोग्राम समस्ते निजे करिया को चेष्टा करिवे जदि किछि असुविधा हबो मु आपन को गाइड करबी किछि असुविधा नाही बट निजे समस्ते किछि न देखि कि यूट्यूब वा चैट जीपीटी एमि किछि न देखि निजे समस्ते करले बेनिफिट पाई परिवे तो दुईटा प्रोग्राम first write a program to swap of two integers using third variable without using third variable. One more program that is write a program to calculate the program to calculate the area of a rectangle. One more, write a program to calculate volume of a cube. Volume of a cube. A चारिटा प्रोग्राम समस्ते निजे निजे ट्राई करिवे यदि किछि असुविधा हैला नेक्स्ट क्लास रे भाबुची अपन कर देबे समस्ते ऐसे किछि कष्ट नाही सिंपल प्रोग्राम देइछि मु without using third variable आमे किछि वेरिएबल यूज न करि किया हो सेही दुईटा वेरिएबल ले आमे केमति करिबा सर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिवो फर्स्ट क्वेश्चन ने कोन कहले अपन कहले x is equal to 10 y is equal to 20 suppose z is variable very good z is equal to x equal to y is equal to z ठीक है then first problem that is solved second question second question x is equal to x plus y y is equal to x minus y x is equal to x minus y variable changes changing the value repeat again what is your answer
x is equal to x plus y. X is equal to x plus y. Y is equal to x minus y. Y is equal to x minus y. X is equal to x minus y. X is equal to x minus. Good. Done. Very good. Yes, sir. Yes, sir. Third question. ଆଉ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ? Third question. Area is rectangle. W. Area is equal to W. First कितना वेरिएबल लगा? तीनटा वेरिएबल। ठीक है, तीनटा वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल will declare the value of L and W. L and W. Correct. Area is the area. Area. Second variable area equal to L into W. Next print करिबा। ठीक अछि? Yes. Okay. Next question number 4. Question number 4. Volume of a cube. L equal to 5. Equal to 26. E equals to 7. And B equal to 8 into What is and the formula? print B. What is the formula to calculate volume of a cube? A into B into C. Volume of a cube. More by 3 pi r cube or radius of cube. No. One देखिए आप थोड़े formula टिके देखी देबे volume of the cube. Sir, I think Side into side. Side into side into side. That is volume of the cube. Yes. Is called a cube. That is a to the power cube. But here directly we take the side value. Side into side into side. ठीक है? But he is called a. हाँ. Whatever the Can value. carrot allowed? Hello. Carrot symbol is allowed. 8 to the power 3 is allowed or not? No. That operator is there. We will go for the details in the operators. Eh? Okay, sir. Okay, operator is there. So well done. बढ़िया कलो तो आज हमें एतिकी जहाँ पढ़ी जे ता ऊपरे ताकू पुनी आउट रे प्रोग्राम जहाँ हमें सीखी जे ताकू पुनी आउट रे नेक्स्ट को हमें अलगा प्रोग्राम जीवु एवं अलगा कांसेप्ट रे जीवु आउ जिते भी किछि असुविधा रहिबो नेक्स्ट क्लास रे आपण माने सब पचारिबे मु निश्चय आपण माने साहाय्य करबी जो जहाँ डाउट्स रहउथबो बुझिबा पई असुविधा रहउथबो बा जहाँ रहउथबो फ्रीली अपन कम्युनिकेट करिवे जहाँ द्वारा कि हमें आपको सब बेले हमर सपोर्ट दबु जहाँ नॉलेज बा जहाँ किछि हमें ये करछु आपको शेयर करिबु यदि आपण किछि पचारियो चाहउछन्ते आपण पचारि परिबे से असुविधा पीडीएफ प्रोवाइड हबो नोट करे ପାଇଁ का कोन कहले सर प्रोवाइड करे देले पीडीएफ में नोट कर देते हमें पीडीएफ दे देले आपण नोट करि परिबे किछि असुविधा नै ठीक अछि आपण नोट करि सर क्वेश्चन जे अछि हां आउ किछि गाड़ी आपनकर किछि पचारिबार अछि क्वेश्चन किछि हां सर क्वेश्चन अछि कोन पचार कोन क्वेश्चन अछि सर हम जो पाइथन लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अछि गेम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एप्लीकेशन इटा सुविधा अछि किंतु दे मैरिज प्रॉब्लम मोबाइल ऐप हां सर मीनिंग का मतलब करने लगा सर ना देखो हमार बेनिफिट मोबाइल ऐप एप्लीकेशन डेवलपमेंट लागि अछि किंतु ता मैरिज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लागि प्रोसीजर अछि ना मोबाइल ऐप देखंतु मोटे छोटो एग्जांपल दउची मोबाइल ऐप तो तयारी करी होबो किंतु गुटे भलो जिंस तयारी करबा दैट इज इंपोर्टेंट तेनु जहारो लाइब्रेरी रे सेमति किछि नाही गुटे भलो ऐप तयारी करिया पई
तो से एंड्रॉइड माने मोबाइल ऐप पाइथन को बेसी यूज करा जाई पारुनी इमती तो खाली माने चलिबा तो करदेले हबनी तो सब बळे ह्यूमन बीइंग चाहूची कि बेस्ट गोटे स्टैंडर्ड ऐप डेवलप करिवो जोटार ही स्कोप टिके रहउनी से टिके कम रहउची नहले आउ सब जिनसे से सपोर्ट करूची ठीक अछि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लागि हमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर करि परमान हां सेति टिके रहउची जिनसे टिके असुविधा रहउची मे बी फ्यूचर वर्जन ने से जिनसे उडा को स्ट्रांग कर दिया जीवो मोबाइल कोटलाइन ठीक होती आउ कहीं किसी पचारिवे की पचारिवे सर मैं पाइथन लैंग्वेज सिखला पर हमें काम करू पारमा हां हां पाइथन लाइब्रेरी जानला पर हम ताको यूटिलाइज करी कि ता भितरे जा फंक्शन सब हम यूज करी परिबा नहीं हमर लाइब्रेरी काम कर पारमा मोबाइल डेवलपमेंट एंता करी हमें हाँ आमे तार जो एडवांस जिनस अच्छी से गुडार एडवांस पर्सन धीरे धीरे से माने क्लास सब ऐड करूछंती हैला किछि दिन परे से वर्जन गुडा आसी गले हमें करि परिबा नहीं वर्तमान वेब एप्लीकेशन करि पारुछे गेम करि पारुछे वेब एप्लीकेशन करि पारुछे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हे पारुची सब विभिन्न जिनस हे पारुची हमें ओवरऑल परिवार एआई रे यूज होउची मशीन लर्निंग रे यूज होउची ओवरऑल होउची ना पाइथन बे बहुत यूज होउची खाली गोटे दुईटा जिनस रे टिके कम व्यवहार करा जाउची नले एवडा सब एआई मशीन लर्निंग डाटा साइंस ए सब जिनस रे भल जिनस सब पाइथन यूज करा होउची नहीं मोर पावर में हमें लाभ करे हमें सेमती डेवलपमेंट करि पारमा के माने हम स्टूडेंट माने करि पारबे कितन हां सिम्पली को सिक्की वाला पर करि परिबे किछि असुविधा नहीं हां सेट हां हां करि परिबे ओके थैंक यू एटा तो क्लियर जाना दे हाथ वाला टेक्निक जाना हाथ टेक्निक तो को दे दो चल ये दो ठीक अछि तो आपण माने पुनी नेक्स्ट क्लास रे जहा भी डाउट्स थिबो बा जहा ये थिबो पुनी ठीक है ठीक है